Yeah, please tell me this PPT is visible for everyone? Yes, madam. Okay. First of all, I Dr. Lalita Kumari from Central University of Rajasthan. I'm here in the assistant professor in economics department, and the task assigned me is quantitative research design. Okay, but I believe few people have already an idea about that. The what is research, what is research design, questionnaire framework, how to read the literature reviews, everything. But today I'm going to present about the quantitative research, the briefly introduce about the quantitative research, because everybody knows about the research is based on the practical aspects. Yeah, हम जब करते हैं तभी हम सीख पाते हैं. Okay, so first I'll explain about what is research. So research is a continuous process. Everybody knows it's a continuous process, it's a never-ending process. Okay, we have a problem, then continuously we apply some different strategies to prove our problem, to find out the outcomes. But ultimately, what is the process? मैडम आप म्यूट हो गए हो. Hello, now I'm audible, sir? Yes, Hello. yes, ma'am. Please. Okay. Yes. Now I'm audible? Yes, ma'am. Okay, and the PPT is visible for everyone? Yes, ma'am. Okay, please confirm me. पता नहीं चलेगा otherwise मेरे को. Yes. So yeah, I'll start from beginning. What is the research? So research, it means we can say that is a process. So process of steps, in the different steps and used to collect and analyzing the information. So these are the steps. The first step is identifying the problems. Identifying the problem, for example, is my problem, I want to research in the women empowerment. So ultimately the identifying the problem, okay, how women is empowered. So I have decided my topic, my problem is that empowering women through microfinance in India. It means that the assessing initiatives in India. Okay, this is identifying the problem. But first I identified the problem, but I have less awareness about my problem. Then to create more awareness, more knowledge about the problem, I am more emphasized on the literature review. I've read the literature review, many articles, and the paper is a reliable studies. I'm talking about the literature review is a reliable in the good research paper. Right. So good research paper, but this literature review has certain steps. The process of steps. The steps, it means that is according to your objectives, your problem, your methodology, and the sum of the studies maybe in the national perspective and the international perspective. Ultimately, goal of the literature review, we enhance our knowledge about the studies ki kitna women empowerment hua hai through SSCs. Along with the literature reviews is provide the several informations related to your research. It means the research, your methodological part. I'm talking about your methodological part. Okay, how did your sampling design, data collections, the source of the data, what kinds of the tools and techniques we have applied in our research. So this all the related information you can collect from the literature review. And on the behalf of literature review, we find out the research gap. And this research gap is provide you, okay, my research is different from this is the uniqueness of your research. And then we specify a reasons of the purpose. Okay, so these are the steps. 3 steps: identifying the problem, literature review, and the specifying a research purpose. The next point is the major point in the data collections. So data collection, it means that this data collections is depends upon a structure, a conceptual structure, a blueprint. So this conceptual structures is blueprint. It means we can say that is generally we call the research methodology chapters in our thesis, our research papers, our project. But ultimately, is a design, is a research design. Okay.
on the behalf of this research design, this methodology, we decide, we prepare the several things like your samplings design, your samples, your data collection procedures, your techniques, and different techniques. These are the things. Okay, so ultimately we can say that research is the process of steps used to collect and analyzing the informations in order to increase our understanding of a topic or issues. Ultimately हम जो भी कुछ करते हैं, we have a target, कोई भी हमारा target है उसको अचीव करना है, कि मतलब उसके लिए हम टाइम बाउंड हैं, बहुत सारी चीजें। तो वैसे ही रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, वी हैव एन प्रॉब्लम इन इश्यू, तो इस इश्यू के अकॉर्डिंग कि हमें ये इश्यू है इसको सॉर्ट आउट करना है, या फिर इसके पीछे के क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, क्या कितनी सारी चीजें हैं, अल्टीमेटली कुछ उसका आउटपुट होना चाहिए। जनरली इन द मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट कि हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं, तो इन इनपुट से हम कितना आउटपुट, तो इट इन द रिसर्च वी हैव एन अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, उसके कुछ सजेशंस देने हैं, हमें कुछ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस देनी है। तो दिस इज द process. Ultimately we can say that research is the process of steps used to collect the and analyzing the informations in order to increase our understanding of a topic or issues. Okay, then today's agenda is introducing the research design. So research design, first the question is mind, what is the research design? So research design actually a conceptual structure. Okay, it's a conceptual structure within which researcher is conducted. It's constitute the blueprint of the collections, measurement, and the analysis of data. कि कैसे डेटा किस तरीके से चीजें, वी हैव several questions in your mind कि okay, I have this my problem, I identify the problem, मैंने बहुत सारी studies पढ़ ली हैं, I find out my research gap, specifications of the reasons and the purpose, but ultimately कहाँ से इसको start किया जाए, किस तरीके से इसको start किया जाए। तो this research design is helpful, it's a blueprint, इट्स अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, इट्स अ स्ट्रक्चर है जो आपको हेल्प करेगा टू फुलफिल योर मोटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडीज। Okay, and so we can say that the research design is a blueprint of the scientific study, and it's include the research methodology. The research methodology, but we include in the research methodology chapter, we include the research methodology chapter is a sampling framework, sampling design, data collection procedures, or your what kinds of the strategy which you have used in your research. And generally in the social science students use in some qualitative research, and the qualitative research is डिस्क्रिप्टिव फिनोमिना, हम लोग उसके लिए कौन से टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स यूज करते हैं, जनरली मीन मीडियन मोड को यूज करेंगे। अदरवाइज द क्वांटिटेटिव रिसर्च इट मींस दैट द स्टैटिस्टिक्स, टी टेस्ट, पेड सैंपल टी टेस्ट, योर रिग्रेशन एनालिसिस, योर कोरिलेशंस, दे आर several statistics. And economic students use the econometrics analysis, different types of econometrics we can use, it's according to your study and your purpose, right? So this is called the research design. The research design is a blueprint in the scientific studies, and it's include research methodology, tools, and the techniques to conduct the research. So it's actually provide the structures and the directions of the research for your favorable result. I'm not talking about the favorable result ki okay is my key SSC is always beneficial for the women empowerment. Somewhat and the some areas not beneficial. Pro is the favorable, it means what you expecting from your studies. It's maybe in the negative side, maybe in the positive side, maybe in the null ki okay it's a minor effect. So kuch bhi ho sakta hai wo cheezein. And then why we need for the research design? Yes, research design. We all of you have in a mind for the beautiful house कि मेरे पास एक अच्छा एक खूबसूरत घर होना चाहिए. Everybody in the mind. Okay, it's constructions of a house, his own house, his house is better, थोड़ा इकोनॉमिकली भी होना चाहिए आपके लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए. तो फॉर व्हाट हम क्या करते हैं उसके लिए? वी नीड ए ब्लूप्रिंट. इट मींस दिस ब्लूप्रिंट, वी कैन से दैट द मैप ऑफ हाउस.
कि उस घर का हम एक मैप बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा कि ओके इसमें इतने रूम्स होंगे, इतनी सारी चीजें होंगे, इट्स अ प्रिपेयर्ड एक पूरा का पूरा आप एक मैप एक डिजाइन करते हैं उस चीज को। और द एक्सपर्ट कौन होता है, कोई भी आर्किटेक्ट वो एज एक्सपर्ट उस चीज को उसी तरीके से करता है, ठीक है। एंड जब हम उस चीज को फॉलो करते हैं, उस मैप को हम फॉलो करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि योर हाउस इज बेटर, इकोनॉमिकली भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, और जो लोग उसे देखेंगे तो ओके इट्स वेरी नाइस, इट्स फाइन, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस काइंड्स ऑफ द कमेंट दे मे पास टू यू। बट सिमिलरली इन द रिसर्च डिजाइन और द प्लान इन एडवांसमेंट ऑफ द डेटा कलेक्शंस, कि एडवांस में हम लोग एक प्लान करके चलते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना के चलते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस प्लान, वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड वी अप्लाई सम टूल्स एंड द टेक्निक्स, ओके। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एनी एरर, आपका जो ब्लूप्रिंट आपने बनाया है, जो भी आपने इस चीज के लिए स्ट्रक्चर्स बनाया, अगर उसमें कुछ भी एरर होता है तो व्हाट इज हैपन, इट मींस दैट दिस एरर मे अपसेट द एंटायर प्रोजेक्ट। कि आपने कभी, आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी चूक हो गई, ओके फाइन, कि मैं आई डिसाइड ओके नो नीड, मैंने कोई लिटरेचर रिव्यूज के लिए नहीं पढ़ा है, इवन आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन, द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव, एंड जनरली ओके ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, एंड यू हैव अप्लाइड क्वांटिटेटिव की बजाय आपने क्वालिटेटिव को अप्लाई किया, देन अल्टीमेटली द एरर इन योर वर्क, योर प्रोजेक्ट, जो मे बी आपको वो इनकरेक्ट होगा, जो मतलब इट्स नॉट गुड फॉर यू। सिमिलरली घर के मैप को, जैसे मैप को हम फॉलो करके घर बना रहे हैं, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा भी ये हो जाता है कि थोड़ा सा भी चूक हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो आपके लिए बहुत कॉस्टलियर हो सकता है, आपके लिए वापस से आप उसको करेक्ट करने के लिए आपको टाइम बहुत देना पड़ सकता है, अल्टीमेटली इट्स हार्मफुल फॉर यू, कि और योर पॉकेट फैमिली भी नहीं होगा और लोग भी इसको बोलेंगे। तो सिमिलरली इन द रिसर्च, सो रिसर्च डिजाइन इट मीन्स दैट द एडवांस प्लानिंग of the methods to be adopt the collections of the relevant data and techniques to be used their analysis, okay. Yeah, so next is the features of good research design. So as we know about that, the features of good design, good research design is flexible, appropriate, efficient and economical. Yes, of course, time and money is matter करता है जब भी हम कोई भी research करते हैं, and we have in some information as the important point which we have follow in the good research design. The first is the means of the obtaining informations. We know about all the informations about your research, your theory and your problems, ठीक है। एंड यू हैव एन स्किल्स, कि आपके पास स्किल्स होना चाहिए कि आप उस रिसर्च को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एंड यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, योर प्रॉब्लम एंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, एंड द लास्ट एंड द मेजर पॉइंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम and money for the research work. It's very important point, and especially for those are the pursuing their PhD. You have all is research design is a blueprint, along with एक और blueprint आपको बनाना पड़ता है कि okay this is the time limit कि 3 years, 4 year and the 5 year, but this time is depends upon the money कि कितना आप उसके लिए स्पेंड कर सकते हो, टाइम स्पेंड करना है, कितना आप मनी स्पेंड कर, तो वो चीजें भी आपको बनाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द गुड रिसर्च design. And the few concepts which we know about the research design, because this concept is applicable in the qualitative and the quantitative research. So the first one is the dependent and independent variable. I guess everybody knows about the dependent and independent variable. Am I right? Hello? Yes, Yes. ma'am. Okay. So what do you understand about the dependent and independent variables? In economic sense, yes, of course, we have used, because economic students is more likely to playing with the numbers. So if you are like to playing with the numbers, and this not in economics, in the social science students, they have an okay like to playing with the numbers. It means the numerical data set. So you always let some dependent variable and independent variable. Ultimately, we can say that you are studying about the cause and effect relationship. So independent variable is a what? Independent variable is a cause. So it is a value, is independent of other variables in your studies. Okay, and the dependent variable is the effect.
So it is a value, it depends upon the change in the independent variable. For example, in my study, the motivation factor is the loan disbursement for the women. So I believe कि loan disbursement is a depending factor, and the saving income, these are the independent factor. Then what happened when increase the loan amount, what kinds of effect on the saving and those. So this is the major part of your study. So dependent and independent variable and extraneous variable. Yeah, this is the third things which we always find out in our model. Extraneous variable, it means we can say that the uncontrolled variable. हम नहीं चाहते हैं इनको, फिर भी हमारी स्टडी हमारे थीसिस के अंदर होते हैं. द जनरल टर्म्स वी कैन से दैट आप पढ़ाई कर रहे हो और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, बट कहीं से आपको बैकग्राउंड कुछ नॉइस आ रहा है, आप उसको कंसीडर आपको अफेक्ट कर रही है. तो सिमिलरली इन द रिसर्च कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफेक्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट एक्ट्रोजीनियस द अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द result of the experiment. So it is not the independent variable that can affect an experiment and the dependent variable. So it is this situational variable. The situational variable, it means some lighting, your background noise, and for example in the SSG's group we are loan disbursement की हम बात करें, सेविंग की बात करें, इनकम भी बात करें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, कुछ इमोशनल, कुछ ट्रेडिशनल वेरियस, बहुत सारी चीजें हो सकती है. दैट वी कैन से दैट इज अनकंट्रोल्ड वेरिएबल. दोज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट योर रिजल्ट, योर एक्सपेरिमेंट. Okay, third point is the control. The control word which we used when we designed the study and minimize the effect of the uncontrolled factor in independent variable. ये जो हमारे exogenous variable जिसे हम uncontrolled variable factors बोलते हैं, उनको control करना. उसमें एक और चीज ऐड करते हैं, that is called the confound relationship. So confound relationship, it means that the relationship between the dependent or independent variable is said to be the confound by and the extraneous या फिर आपका uncontrolled factors. And the next point is your research hypothesis. Everybody knows about the research hypothesis because the hypothesis is a major part of your research. इन्हें ही हमें prove करना पड़ता है, और जब हम इनको prove करते हैं, then we go for the outcomes, the output of your study. So research hypothesis, it means that is a statement. Is a hypothesis is a statement. We always say that hypothesis is a statement of expectations and the predictions that will be tested by the research. My hypothesis, for example, my hypothesis, there is no impact of loan disbursement in SSG's women empowerment. It is a statement, but मुझे इसको इस statement को मुझे prove करना, मतलब for prove this statement मुझे एक methodology चाहिए, and that मुझे उसके लिए पूरा एक concept चाहिए. Concept in the what kinds of the techniques I'm following to prove and disprove these things. Okay, in the hypothesis, it may be the null sign, and the alternative sign. This depends upon your study, what you want in, especially in the course of the science background students. ठीक है, ये चीजें एक universal truth है. Okay, fine. Then null hypothesis. Otherwise, we follow the alternative hypothesis. Okay, last point is the experimental and non-experimental hypothesis testing research. Yeah, this is some very important, the major part. Experimental and non-experimental hypothesis. This is testing research. Experimental, it means that when independent variable is manipulated in trumped. Experimental hypothesis testing research, and in which an independent variable is not manipulated, is called a non-experimental hypothesis testing. I will explain you in details in next. Yeah. So types of research, as we know about that, the three types of research. Research design is quantitative research, then qualitative research, and mixed methods. And you know very well about that, the qualitative research. What is the qualitative research? So qualitative research is a systematic,
एक subjective approach है. It means we can say that descriptive data and generally to prove this and we use for the अगर हम बात करें कुछ tools and techniques के लिए तो mean medium mode generally हम इन चीजों का उसमें use करते हैं. तो this is your qualitative data, and the qualitative this is commonly used in social science and humanities, and sometimes in your psychology, education, health science, histories, etc. So now we'll come from the topic. The main topic actually is a agenda is a quantitative research, which जिसके बारे में मुझे आज बात करनी है. So quantitative research. So quantitative research, it for the name is the quantity. It means that the sum is indicates some numbers. कि जब भी हम किसी के कितने भी कुछ when we go for buying या purchasing the any goods तो वो हमसे पूछता है कितनी quantity. It means the quantity 1 kg 2 kg. It's in form of the number. तो उससे हमें पता चल रहा है अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो अल्टीमेटली विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, द डेटा इन फॉर्म ऑफ द नंबर. Okay, so the quantitative research is a formal, objective, systematic process in which the numerical data are used to obtain information about the world. Okay, and then further, okay, we know about the quantitative research. की न्यूमेरिकल डेटा है, कुछ नंबर्स है जिनको लेकर हमें रिसर्च करना है. बट ये रिसर्च कैसे होगा उसके लिए आपको एक फिनोमिना आपको कुछ यूज करना पड़ेगा, कुछ अप्लाई करना पड़ेगा. तो दैट मीन वी कैन से दैट वाया स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड, कुछ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हो सकती है, कुछ इकोनॉमेटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकती है. दैट वी कैन से दैट इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च. अल्टीमेटली इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज, techniques, and the assumptions used to study in psychological, social, and the economic process by the exploring of the numerical data. So quantitative research is the process of collecting as well as analyzing the numerical data. So it is generally used to find the pattern, average, कुछ आपको प्रिडिक्ट करना है, as well as the cause and effect relationship between the variable being studied. Cause and effect, it means we have some independent variable and dependent variable, and we collect the informations. अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा सेट की. So it means that ये डेटा कहीं से तो आएगा. We collect the informations, किसी न किसी कोई सोर्स होगा उस informations को. This information sources में भी हम लोग किसी प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट करते हैं. As you people knows about that the source of the primary data. प्राइमरी डेटा के लिए हमें अल्टीमेटली हम उसके लिए क्वेश्चनर एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. दिस क्वेश्चनर दिस स्ट्रक्चर्स इज बेस्ड ऑन दैट. उसके लिए आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं. दिस अदर इंफॉर्मेशन एंड द स्टेटमेंट कि आपके अपने स्टडी के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है, फिर उनको कोडिफाई करते हैं. देन वी अप्लाइंग सम टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मे बी द मेथड विच वी हैव अप्लाइंग फॉर द प्राइमरी सर्वे के लिए हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड भी रखते हैं. मेलिंग का भी सिस्टम है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं कुछ. there are several types of techniques which we have used to collect the information, but in the secondary data, this secondary data is already collected. वो किसी ने कलेक्ट किया हुआ है. We collect the information and applied some tools and techniques, and generally we collect the secondary data from government bodies, like some ministry से आप data ले सकते हो, RBI से आप data ले सकते हो. If you want to work on the labor, then you look the data from NSS, National Sample Survey. There are so many sources to collect the information like in the secondary form. Okay, but we know that the primary data is more reliable than secondary data. Okay, in the primary data is more reliable than secondary data because of कि आप खुद field में जा रहे हो, have interact with the people, so you know about what is the actual problem, what faced by the people. You have a more case study, or you can use this case study as evidence when you writing your thesis. Interpretation जब हम करते हैं, जब statistical interpretation हम कर चुके होते हैं, then उसके बाद हमें क्या करना होता है, कुछ evidence, कुछ fact बताने पड़ते हैं. तो when आप primary study कर रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे केस स्टडीज हैं आपके पास, बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे एविडेंस है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट द प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल देन सेकेंडरी डेटा, बिकॉज नोबडी इज आपको कोई भी उसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क नहीं है. ओके,
Then types of the quantitative research. As we know about the quantitative research, it means is the plan, is the strategy, is the techniques and the assumptions. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. तो this techniques, this strategy, this assumptions is based on some things. कि किसी चीज पे तो depend कर रहा है ना. तो we have two types of the quantitative research design. The first is called the experimental, and second is your non-experimental. Am I audible now? Hello. Yes, ma'am. Yes, madam. Okay, fine. Yeah. So experimental research design. So we can say that experimental research, especially in the social science students, everything, जब तब उनको नहीं पता है कि okay, this experiment is happening in the social sciences, तब तक उनके mind में एक ही क्वेश्चन, experiment it means that ये experiment होगा किसी lab के अंदर, किसी industry के अंदर ये experiment होगा, this experiment में भी किसी जानवर पे हो रहा है, किसी इंसान पे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट निकल के आएगा कि we are the social sciences student, तो हम लोग कैसे experiment कर सकते हैं, we don't have any lab, but I told you कि social science students कि हमारे लिए जो हमारा environment, ये चारों तरफ जो भी चीजें हैं यही हमारी lab है. हम क्या करते हैं, हम experiment करते हैं किसी human being पे, किसी policy implementation हुआ है, उससे कितना effect पड़ा है किसी human being पे, and the group में भी, क्योंकि हम लोग experimental research की बात कर रहे हैं, तो experimental researchers allow the manipulations. ओके कुछ रैंडम स्ट्रेटजीज को वो अलाउ करता है. अल्टीमेटली वी डिसाइड द ग्रुप, दिस डिसाइड द ग्रुप में बी इन द मेल एंड फीमेल, डिसाइड ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एजेस, अकॉर्डिंग टू द कास्ट, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल बैकग्राउंड. तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं. तो इन सोशल साइंस स्टूडेंट आपके लिए लैब सिर्फ एक कमरे के अंदर नहीं होगी जिसके अंदर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट होगा. नो, आपकी जो लैब है वो एक आपके चारों तरफ है. एक जो सोसाइटी है एज यू हैव टू कंसिडर एज योर लैब, क्योंकि आपको वहीं से आंसर्स मिलने वाले हैं और उन्हीं आंसर्स को आपको कोडिफाई करके आपको रिसर्च करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है. So experimental research is more scientifically sophisticated research methods. Why? Because we analyze, we examine the hypothesis in the causal relationship between dependent and independent variable. Ultimately, we can say that we analyzing the cause and effect relationship. कि मैंने एक hypothesis बनाया, there is no relationship between these and this. ओके हमारे पास दो, एक आपका डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि इसका कोई कॉज नहीं है, कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं है. तो उस अकॉर्डिंगली मैंने कुछ नल हाइपोथेसिस, कुछ ऑल्टरनेटिव उन हाइपोथेसिस को प्रूव करना है, उनको मुझे एग्जामिन करना होता है. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट in your experimental research method we examine, we measure the hypotheses and the relationship between dependent and independent variables. So generally this is applicable in the natural sciences, applied sciences and the social sciences. Social sciences along with your psychology, education, the psychology, your sociology, these are the departments also. Yeah. So experimental research design. So experimental research design, it means you आपको कुछ experiment, कुछ techniques को वहाँ follow करना पड़ेगा. Okay, so in the major example अगर हम बात करते हैं कि अगर for example मुझे कुछ symptoms हैं कि like मुझे कभी fever आ रहा है, कभी fever जा रहा है, this is a, तो मुझे क्या करना कि उसके बाद मैं डायरेक्टली डॉक्टर के पास जा रही हूँ. तो डॉक्टर क्या करेगा कि वो मुझे सुनेगा, अकॉर्डिंगली उसके लिए वो मुझे कुछ टेस्ट डिसाइड करेगा. तो मतलब लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कि मुझे ये कॉज है, ये इफेक्ट है, अकॉर्डिंगली दे हैव प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सिमिलरली इन द सोशल साइंस की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट सम पॉलिसीज एंड दिस पॉलिसी इफेक्ट ऑन द पीपल कि ग्राउंड लेवल पे उसका कितना इफेक्ट होता है, इज फेवरेबल फॉर द पीपल एंड द अनफेवरेबल फॉर द पीपल. बट वी कैन नॉट से दैट कि ओके गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इम्प्लीकेशंस रखा. द पॉलिसी इट मीन्स वन ऑफ द पॉलिसीज फॉर द पॉवर्टी रिडक्शंस, कोई भी पॉवर्टी रिडक्शन के लिए
पॉलिसी है, एंड स्पेशली इन द टारगेट फॉर द विमेन, इन द विमेन एम्पावरमेंट। हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के, यहाँ पर बात करेंगे अल्टीमेटली गोल क्या है गवर्नमेंट का, पॉवर्टी रिडक्शन एंड द विमेन एम्पावरमेंट। हम नहीं कह सकते हैं कि एसएससी से पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है और विमेन एम्पावरमेंट हुआ है। उसको हमें कहने के लिए वी नीड to be clarified through the experiment कि हम क्वेश्चन सर्वे मेथड whatever the method which we have used, not compulsory कि always हम primary data ही use करेंगे। we collect the information from the secondary sources कि NABARD and RLM will take the data and then applying some tools and techniques, and accordingly I said okay yeah the SSC is a positively impact and SSC is the negatively impact, and accordingly we can say that कि government की ये policy है ये affect डाल रही है positively and negatively. So similarly in the social science students and the work on the experimental research, and there are so many platforms, so बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप ये experiment को use कर सकते हैं. And the different types of experimental research. The first one is your pre-experimental, quasi-experimental, and the true experimental. But I'm telling you, true experimental research is is good and much better than others. So true experimental research design. So true experimental research design, it means that the statistical analysis to prove and disprove the research hypothesis. Your hypothesis may be accepted, maybe rejected. It depends upon your result. Okay. Then further, it studies about the cause and effect relationship within a group. But the major point in the true experimental research, because this true experimental research is a part of the experimental research, and the experimental research is always allow the manipulation in the data set. कि इंडिपेंडेंट डेटा के अंदर आप मैनिपुलेशंस कर सकते हैं. द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिसाइड्स इज अ 4 मेजर एलिमेंट्स, एंड दिस एलिमेंट इट मींस दैट योर मैनिपुलेशंस controlled. I have already explained you about in previously about the controls. We have some exogenous variable. This is variable, so those are directly indirectly affect your dependent variable and the result of your study. तो उनको भी control करने की जरूरत होती है. तो true experimental and the experimental your research design allow the manipulation, control, and yes, random assignment and the random selections. Okay, so control variable we used to prevent the outside factor from influencing the study. कि जितने भी outside factor है जो आपने अपने study में नहीं रखा है फिर भी आपके study को harm कर रहे हैं, affect कर रहे हैं, आपके result को किसी न किसी तरीके से थोड़ा affect किया जा रहा है, तो हम उनको control करेंगे. And then the random assignment. So random assignment we choose a group randomly, no matter who is the participant. So the 4 major element we can say that your randomizations, control, and manipulation. This is called the true experimental design. So true experimental design, 3 major points, 3 major factors. The first is the control group that is not subject to change, an experimental group that will be experience the change variable, and the second a variable that can be manipulated by the researchers, and the random distributions of the variable. Okay, so I'll give you an example for that. We have an example. Okay, what is the true experimental design? So true experimental design, it means is the students के example. These are the students for 10th class students, and the 10th class students always are difficulty in the maths. Okay. So find the school administration is decide in experimental with the student. तो उन्होंने क्या किया, एक क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल इन द 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने 2 स्ट्रैटेजीज लगाई. द 2 स्ट्रैटेजी इट मींस दैट द वन इज दैट द न्यू टीचिंग मेथड्स एंड द सेकंड इज द स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड जो कि चला आ रहा है. एंड उन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप कि जो हम रैंडम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं कि उसके लिए उन्होंने क्लास के 2 ग्रुप बना दिए हैं. 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया है पूरी क्लास को. नो मैटर, उन्होंने ये नहीं देखा है कि इस ग्रुप में ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते हैं, उसमें ज्यादा वीक स्टूडेंट्स होते हैं. नहीं, रैंडमली या फिर आपको होते हैं ना फ्लिप इन द कॉइन कि ठीक है ये आया तो ये उधर गया, ये उधर गया. इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स डिसाइड किए हैं कि मैथ्स की क्लास होगी जिसके पास हमारे पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं. द न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, मेथड है, और दूसरा हमारे पास एक कोई स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड है. और हमारे पास पार्टिसिपेंट है यहाँ पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और जो हमने रैंडमली जिनको चूज किया है वो हमारे पास ग्रुप ए है, ग्रुप बी है.
ठीक है, ग्रुप ए के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप बी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स, जिनको हमने रैंडमली डिसाइड किया है। और हमने क्या किया कि इट्स 6 वीक्स ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, एक आपका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो 6 वीक के लिए है। वो एक्सपेरिमेंट कि 6 वीक आपने ए ग्रुप को स्टूडेंट्स को पढ़ाया है न्यू टीचिंग मेथड से, एंड द बी ग्रुप के लिए यू हैव टू फॉलो द सेम स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड। उसके बाद जब आप देखते हैं टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आपको पता चलता है कि ए ग्रुप इज मच बेटर देन बी ग्रुप। कि अल्टीमेटली वी कैन से दैट जो हमारा एक्सपेरिमेंट था कि न्यू टीचिंग मेथड जो हमने अप्लाई किया है ए ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि उनका जो मैथ के जो सब्जेक्ट्स के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, इंक्रीज हुई है। So this is called the true experimental design. So true experimental design, it means the manipulation is allowed. We control the extra. ऐसा नहीं है ना कि उनको कुछ बाहर के भी सोर्सेस मिल सकते हैं, आउटसोर्सेस भी मिल सकते हैं, आउटसाइड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट नो, हम उन चीजों को कंट्रोल करके चल रहे हैं। रैंडम असाइनमेंट की हम जो बात कर रहे हैं, हमने रैंडमली सिलेक्शंस किया है अब स्टूडेंट्स का, किसी को ए ग्रुप में, किसी को बी ग्रुप में। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Okay, so social science students, we always use this true experimental research की and generally we जब हम मेल और मेल और फीमेल का कंपैरिजन करते हैं तो we use this true experimental research कि इन दोनों के ऊपर हम लोग सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं, which one is better, male is better and the female is a better, ऐसा भी हम कई बार करते हैं। And the second is the cozy experimental research design. Okay, so cozy experimental research design is लिटिल बिट अगर हम बात करें जो हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से थोड़ा सिमिलरली होगी, बट द मेजर पॉइंट इन द कोजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डज नॉट इंक्लूड द रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट इट मींस इन हमने लास्ट ट्रू एक्सपेरिमेंटल केस डिजाइन के अंदर बात की थी कि वी हैव ना 4 एलिमेंट, द वन इज द 2 इज द मैनिपुलेशन एंड योर रैंडम असाइनमेंट कि हम रैंडमली वी चूज द स्टूडेंट। ठीक है, रैंडमली हम स्टूडेंट्स को चूज किया है एंड देन उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, बट यहाँ पर उस तरीके से चीजें नहीं होगा। रैंडमाइजेशन इज नॉट अलाउड इन द कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसोर्स। कॉजी एक्सपेरिमेंटल यूज सोशल जो आपका जो भी एक्सपेरिमेंट्स होगा, बिकॉज इट कैन बी डिफिकल्ट टू यूज द रैंडम सिलेक्शन फॉर द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। For example, the random selection is not applicable when you study in smokers and non-smoker. उसके लिए आपको एक उस सेक्शन को ढूंढना पड़ेगा जो स्मोक करते हैं, उस सेक्शन को ढूंढना पड़ेगा जो नॉन स्मोकर्स हैं। हम रैंडमली एक पूरे ग्रुप में से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज द ए ग्रुप, दिस इज द बी ग्रुप। नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सो द कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज वेरी useful. This method is used more in the social sciences. It is very useful to determine the general trends in the behavior of the group studies. ठीक है, and yeah, one more example for that कि depression. Depression is not a common. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेक्शन है, हमारे कुछ जानने वाले हैं, तो 50 to 60 पीपल है जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं एंड मुझे उन पर रिसर्च करना है। ठीक है, और मेरा रिसर्च जो है कि कितने लोगों को डिप्रेशन है और डिप्रेशन की थेरेपी पे मुझे रिसर्च करना है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर मैनिपुलेशन और रैंडम असाइनमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट आई फाइंड आउट कि ओके ये दिस आर द पीपल जिनको डिप्रेशन है। Then I'll 60 people I have divided in the 2 groups, group A and the group B, and applying the different strategy like different therapy, and then we compare. Because in the cozy experimental research is timing is matter करता है, and then second is the pre-test and the post-test. The first is the way identified the people जिनको depressions हैं, then 2 week या 3 week आप उनको कुछ therapy दे रहे हैं, the 2 therapies and both the therapies is different. Okay, then we compare कि ओके द थेरेपी 1 को कितना बेनिफिट हुआ है और जिनको थेरेपी 2 मिला है उनको कितना बेनिफिट हुआ है, एंड व्हाट इज द सिचुएशन इन बिफोर ज्वाइनिंग दिस थेरेपी एंड व्हाट इज द सिचुएशन इज आफ्टर ज्वाइनिंग द थेरेपी। इट मींस इज द टाइम एक मैटर करेगा कि जितना लंबा टाइम जाएगा उतने लंबे टाइम में आपको एक ट्रू एक जो रियल एनालिसिस, जो रियल एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे, रियल आउटपुट की हम बात करेंगे, वो मिलेगा। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट
determine the general trend in the behavior of the group studies. कि आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से आप उनका बिहेवियर को, उनको कितना बेनिफिट हुआ है, आप उस चीज को मेजर कर सकते हैं. And the last is experimental, is pre-experimental research design. So pre-experimental research design is very weak, or as a researcher has very little control over the experiment, because it's actually a short case, and they depend upon, again this depends upon the one group pre-test and the one group post-test. So, and here is also there is no control of the extraneous variable. जो भी uncontrolled variable उसका आप यहाँ पर कोई control नहीं हो सकता है. तो we can say that there is this pre-experimental research design is considered as very weak, because researchers has very little control over the research. जो researchers उसका control इसमें बहुत कम होगा, because it's a small, the single group studies उसमें होता है, the manipulation of the independent variable but limited control over the extraneous variable, no randomizations and no control group. So it means no control, no randomizations. So it's actually it's a weak study. So here the two types of अगर हम बात करें types of pre-experimental research design, we have 2 types: the one short case design, and the second the one group pre-test and the post design. So one short case design, it means that the single experiment group is exposed to the experiment treatment, and the observations are made after the implementations of the treatment. And then after this treatment, the only the one group of the study subject is selected as experimental group. कि आप single group के ऊपर कोई भी strategies है, कोई भी आपको कुछ भी experiment करना है, उस पे experiment करोगे, then we measure, we compare the single group को आप compare कर रहे हैं pre and post. So this is called the pre-experimental research. अगर हम experimental research design की बात कर रहे हैं, तो आपका जो true experimental research design is much better than others. Then most probably हम लोग quasi experimental की भी बात करते हैं, because we restrict, हम कई बार अपने आप को बहुत restrict करके चलते हैं, and especially in the science studies, आपका या फिर हम कोई clinical science की बात कर रहे हैं, जिसमें हम specifically बात करें किसी disease की, किसी problems की बात कर रहे हैं, तो वहां पर manipulations और आपका ये जो random assignment है, जो control की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको allow नहीं करेगा. But ultimately जब भी हम experimental research की बात करें, तो experimental research it means that कि you have to allow the manipulations and the random assignment. Yeah. Then second is the non-experimental research design. But before going to the non-experimental research, please let me confirm I'm audible or not. Hello? Yes, madam. Yes, you are ma'am. audible. Okay, fine. Yes. So it's the non-experimental research design. As we know that the experimental research design. So experimental research design, it means that the manipulation is allowed. Okay, but in case no manipulation. So the many of us here is जो आप में से कोई अपनी PhD कर रहे हैं, many of them, मुझे कल लिस्ट मिला था, I see the list की students from social, majority of the people from the social science background. So ultimately social science student आपके different problems होगी, and then according to this problem, majority of the people applying in the quantitative research, I believe, because especially in the economics, people have more emphasis on the quantitative research. So अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, कि हम फर्स्ट हम इसी के बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें कि वी हैव एन प्रॉब्लम, कि आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम यू आर अप्लाइंग सम टूल्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, कि आप किस तरीके से वो टूल्स, किस तरीके से वो स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे. कब कहेंगे कि माई स्टडी, मेरी जो स्टडी, इट्स वेरी इजी टू से दैट कि माई स्टडी इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी. ठीक है, मेरा क्वांटिटेटिव अप्रोच को मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ. बट इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, इट मीन्स दैट उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी. अगर हम बात करें, कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस होगा, कुछ नॉन एक्सपेरिमेंटल बेस होगा. अगर हम एक्सपेरिमेंटल बेस चीजों की बात करें, तो एक्सपेरिमेंटल बेस में भी आपको बहुत सारी चीजें, बिकॉज जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इज डिफरेंट. सो अगर हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो वी हैव 4 एलिमेंट्स लाइक मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडम असाइनमेंट्स, हमारा कुछ रैंडम सिलेक्शंस होगा. बट हियर अलाउ, वो सभी को हम लोग अलाउ करके चल रहे हैं. ठीक है, और जनरली हम लोग करते हैं जब हम फील्ड सर्वे पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर
टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कि किसी भी फील्ड में जा रहे हैं और अभी तक हमने कुछ इस चीज को नहीं किया है कि हम सिर्फ मेल ही मेल से भरवा रहे हैं या फीमेल से भरवा रहे हैं, हम डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से अपने क्वेश्चनर को फिल करवा रहे हैं। एंड उसके बाद जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तो हम उसमें क्या कर लेते हैं कि हमारा कुछ 50 का सैंपल है, देन 50 के सैंपल में 25 पीपल हमने जो मेल लिया, 25 को फीमेल लिया, एंड द सेम उनको जो बेनिफिट्स है वो सेम है, मतलब जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का जो बेनिफिट है सेम फॉर द मैन एंड द सेम फॉर द वीमेन। बट उसके बाद हम इजिली कंपेयर करते हैं। तो बहुत सारे सोशल साइंस स्टूडेंट्स हैं, दोज आर वर्किंग इन द जो भी हम पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि दिस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज फेवरेबल फॉर द पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, इट मीन्स विल इंक्लूडिंग द मैन एंड फीमेल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल इन द वीमेन, देन वी उसके अंदर भी हम ग्रुप बनाएंगे। वे हम ग्रुप किस तरीके से हम रैंडम असाइनमेंट या फिर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। दिस मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू द एज कि बिलो 30 एंड आफ्टर 30 वी कंपेयर एज पर द एजुकेशन वाइज हम चीजों को कंपेयर करते हैं। वी फ्रेम द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू द इनकम। So these are the things which we have including in the experimental research design, and generally the most probably people are following the experimental research and the true experimental research design, especially in the social science student. But in the quasi experimental research design, it means we are हम लोग इसमें टाइमिंग की भी बात करेंगे, इसमें pre and post. It means the comparison according to the time कि what before this क्या है, आफ्टर दिस क्या है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो कोजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन मोस्ट प्रोबेबली इन यूज इन द अप्लाइड साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज, एंड दोज पीपल आर जनरली वर्किंग ऑन द बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, इन द स्पेसिफिक पॉइंट पे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मैनिपुलेशंस इज नॉट अलाउड कि हम नहीं सेग्रीगेट कर सकते हैं फ्लिप ए कॉइन की किसी भी तरीके से कोई भी प्रोबेबिलिटी मेथड्स लगा के कोई भी गेम के थ्रू हम इस चीज को नहीं क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो इट मींस आई ऑलवेज रिमेंबर इज द कोजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज difference between actually true experimental and the quasi experimental is that in the quasi time there is this 4 element like your manipulations and random assignment, these 2 are not allowed because हमें वही चीजें चाहिए जो हैं। if we want to be study in the depressed people, depressions जिनको है तो ultimately आपके लिए नहीं मैटर करता है populations, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें चूज करोगे जिनको डिप्रेशंस है। ठीक है। if you want if you want to be measure the negative externality, so the cause of the negative externality for example कि एक स्मोकर है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट कर रहा है, जो भी आपका कोई भी कार्बन एमिशंस है जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हुई है। अगर द पीपल आर वर्किंग इन कुछ इंडस्ट्रीज पे हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्रीज से क्या होगा कि ये जो स्मोक क्रिएट हो रहा है, जिस स्मोक से क्या होगा कि जो सराउंडिंग द पीपल हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं वो वहां रह रहे हैं, उनको वो अफेक्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो एरिया होगा स्टडी का, हमारा जो सैंपल होगा उस स्टडीज के लिए, वो वही लोग होंगे दोज आर द अफेक्टिंग दिस प्रॉब्लम। So the quasi experimental it means is the true, जो सच है, जो दिख रहा है, हम उसी चीज की ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। And the pre-experimental results are weak. It means you have in a single group and then you compare with the single group and the single variables and manipulations and the जो हमारे unfollowed जो variables आते हैं उन पे हमारा कोई control नहीं होगा। तो this is the basics about the experimental research. If you guys have any doubt, please ask me, and then further we'll discuss about the non-experimental research design. Any doubt, anybody? Hello? Hello, am I audible? Yes, ma'am. You know, I have one Yes, doubt. ma'am. Just a minute. Yes. Yes, sir. Ma'am, could you just tell me? I'm a little bit confused about it. What do you mean by manipulation in the population? Yeah, what is Yes. it? Yeah, right, sir. Right. So the population manipulation, it means we have randomly choose ना. It means जब हम बात करते हैं, हम sometimes this पूरा sampling framework करता है, तो आप randomly किस को choose कर रहे हो, no matter कि वहाँ पर वो problem है कि नहीं। Okay, fine, this is SSC's implementation and overall in the Rajasthan, then ठीक है, हम इस village से भी ले लेते हैं, उस village से भी तो manipulations करते हैं in experimental research design, we always allow in the manipulations.
कि आप रेंडमली चीजों को चूज कर रहे, मैनिपुलेट कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट द रिजल्ट, द फेवरेबल रिजल्ट्स के लिए अपने। Okay. You mean to say that randomization and manipulation both comes under, two side of the coin? Yes. So these things are happening in case of the experimental design, not in the non-experimental design case. Yes. ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई? Hello. Yes, am I audible? Yes, ma'am. You're audible. Yes. मैम मैं संघर्ष मिश्रा, मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं मैं कोई मतलब कोई पूछ रहा हूँ, मैं केवल एक मतलब ऐसा मैं एक जानना चाह रहा था कि मैम जैसे मान लीजिए कोई कंटेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है, किसी कंटेंट को मैंने लिया और वाया चैनल मतलब आप मैनिपुलेशन की जो कंटेंट की जो मैनिपुलेशन की बात है, वो एक कंटेंट कोर है, उस कोर कंटेंट को हम एक वाया होते हुए एक अनदर पर्सन उसने पढ़ा और वो पूरा एक कंटेंट ही मैनिपुलेट हो गया, राइट। मैनिपुलेट हो गया, ठीक है। तो वो सोर्स से जो वो कंटेंट जो लिया गया है और जो डेस्टिनेशन पे पहुंचा गया है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें कि जो चीजें इनकोड की गई हैं और लास्ट में जो चीजें डिकोड की हैं वो चीजें मैनिपुलेट हो गई हैं। ये एक्चुअली मैम क्या है कि जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा वो इन सब चीजों को समझ पाएगा, लेकिन जब एक रिसर्चर जब एक स्टार्टिंग बिगिनिंग में होता है तो वो चीजों को समझ नहीं पाता है कि कंटेंट को हमको चीजों को कहाँ से लेना है। तो लेकिन ये क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में ये चीजें कम देखने को मिलती हैं। Just a minute, can you repeat once again? Actually, ये voice is lagging. Yeah. ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में ये ज्यादा देखने को मिलता है, कंटेंट मैनिपुलेशन क्वालिटेटिव। Right. Yes, so qualitative is the content manipulation is in allowing the qualitative because उसमें आपको content होता है, क्योंकि आप एक subjective forms में कुछ चीजों को लिख रहे होते हो, subjective forms में आप analyze कर रहे होते हो। Right. Yes. तो उसमें मैनिपुलेशन ज्यादा होने का चांस है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव में ऐसे चांसेस कम हैं। तो इन दोनों में आप एक क्या डिफरेंट कर पा रहे हैं, मतलब क्या इन चीजों को समझा पा रहे हैं कि हम रिसर्च को किस डायरेक्शन में अपने ले जाना पसंद करें, कि हम क्वालिटेटिव पे ज्यादा बेस्ड हो, क्वांटिटेटिव पे ज्यादा बेस्ड हो, और अगर क्वालिटेटिव पे बेस्ड हो तो हमको किन किन चीजों को आपको मतलब वो एक पॉइंट आउट करके चलना पड़ेगा कि इन चीजों को हमको बेहतर करना है। क्वांटिटेटिव पे जा रहे हैं तो हमको इन चीजों को पॉइंट आउट करना है, बेहतर करना है। इसलिए मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा था। जी सर, एक्चुअली देखो सर, मैं इस चीज के लिए आपको यही आंसर कर पाऊंगी कि अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि आपकी स्टडी किस बेस पे जानी चाहिए, मोर आपको ज्यादा स्ट्रेस क्वालिटेटिव पे जाना चाहिए क्वांटिटेटिव में, एक्चुअली दिस थिंग्स इज डिपेंड्स, ये डिपेंड करती है कि आपकी स्टडी की क्या डिमांड है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आपने उस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको आगे जो हमने बात की ना, आपका जो आपका पूरा लिटरेचर जो आपका ब्लूप्रिंट है वो उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दैट कि अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव एक आपको पूरा स्टेटमेंट है, सॉरी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म्स में पूरा देना है, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, देन यू हैव मोर एम्फसाइजिंग इन योर क्वालिटेटिव स्टडी। बट द क्वांटिटेटिव स्टडी इट मीन्स यू अलाउ द नंबर, इफ यू आर इजी, ठीक है, हमें नंबर, because देखो quantitative study you playing with the number and it's very difficult to playing with the number because this number is a 1 2 3 number in the number दिखने में बहुत easy होता है, but उन numbers के साथ playing it means उन numbers को analyze करना is very difficult. It means the first is the difficulty to identify कि what kinds of the strategy, what kinds of the tools and technique which we have used to analyzing, कि आपको उस स्ट्रेटजीज को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पर उस स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इज अ प्रोसेस, जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, जो आप मैनिपुलेशन की आप बात करें, अगर हम यहाँ बात करें द क्वांटिटेटिव स्टडी, ओके फाइन, मेरे पास कुछ नंबर्स एंड आई हैव डिसाइडेड कि इन नंबर्स के ऊपर मैं सबसे पहले ये वाले टेक्निक्स को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने उसके ऊपर सिंपल वेरी सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, बट रिग्रेशन आई हैव मैनी डिपेंड, मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो इट मींस दैट द मल्टीपल रिग्रेशंस मॉडल को हम यूज कर रहे हैं। बट ये चीजें वहीं खत्म नहीं हो जाती है, उसके बाद फिर फर्दर बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। फर्दर एनालिसिस इट मींस दैट द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, तो उसके अंदर कुछ मल्टी कॉलिनियरिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो
अगर आप दोनों चीजों की बात करें, द क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क एंड द क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क, ये दोनों एक बहुत बड़ा मैटर होता है, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, बट हम चीजों को तब अप्लाई करते हैं, ये चीजें अप्लाई करनी पड़ती है अगर आपके स्टडी की डिमांड है कि नहीं। अगर आपका काम क्वालिटेटिव फॉर्म में चल रहा है, अगर बेसिक स्टैटिस्टिक्स को आप यूज कर रहे हैं, मीन मीडियन मॉड एंड आप कुछ ग्राफ डायग्राम से आपका काम चल रहा है, तो नो मैटर कि आप क्वांटिटेटिव की तरफ शिफ्ट करें। बट स्टिल अगर आपकी स्टडी की डिमांड है कि आपको ये नंबर्स मिलेंगे और नंबर्स के लिए आपको प्रूफ करने के लिए आपको ये स्टैटिस्टिक्स, ये इन चीजों को अडॉप्ट करना है, देन तो वो चीजें अलग हैं। और ये बात मैनिपुलेशन की, मैनिपुलेशंस हर रिसर्च के अंदर होता है। अगर आप बात करें क्वालिटेटिव में भी है, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव में भी होगी। अगर आप आर गोइंग फॉर द डेटा कलेक्शंस के लिए हम लोग जब भी जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो स्टेटमेंट्स जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद ही बायस्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ मैनिपुलेशंस आ जाती हैं। जब हम अगर हम बात करें कि अपने लिए कुछ स्टडी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है वहां भी प्रॉब्लम है, हम हमेशा मैनिपुलेट करने के, खुद को भी मैनिपुलेट करने की, ओके हम देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए फिजिबल होगा जहां वो प्रॉब्लम होगी। तो जो मैनिपुलेशंस की बात कर रहे हैं हम, रैंडम असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये चीजें दोनों साइड हैं। बट हाँ, ये जो रैंडम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, ये आपको क्वालिटेटिव में नहीं मिलने वाला है ज्यादा, जितना आपको क्वांटिटेटिव में मिलने वाला है। तो सर बात ये है कि आप बात करें क्वालिटेटिव को चूज करने की, क्वांटिटेटिव को चूज करने के लिए, तो मैं आपको ये कहूंगी फर्स्ट यू क्लियर अबाउट योर प्रॉब्लम। अगर आपकी प्रॉब्लम आपके स्टडी की डिमांड है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज योर रिसर्च डिजाइन, लाइक क्वालिटेटिव फॉर्म इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म। थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay. Yeah, so next is a small topic in non-experimental research design. So non-experimental research design, it means we can say that in the lack of manipulations of in the independent variable, and the researchers collect the data without making change और इंट्रोड्यूसिंग द ट्रीटमेंट, कि नहीं जो आपके पास एक्चुअल डेटा है, कुछ एक्चुअल फिगर्स हैं, उन्हीं के बिहाफ पे आपको काम करना पड़ेगा। सो द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट लैक्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, उनमें मैनिपुलेशंस यहाँ नॉट अलाउड हो गई। एंड लाइक जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, सो अनलाइक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेयर द वेरिएबल्स हैड constant, non-experimental research happening during the study, the researchers cannot control, manipulate, or alter the subject that relies on the interpretation of the observations to conclude. And this means that the methods must not rely on the correlations, surveys, case studies, and they cannot demonstration the actual cause and effect relationship. And then again we can say that the in case of the non-experimental research is researchers collect data without making change or introducing the treatment. The major point, it means that the no manipulations, it means that the lack of manipulations and the independent data, and the researchers collect without making change or introducing the treatment. That we can say that there is a difference between the experimental and the non-experimental research design. And we have in the 5 types of non-experimental research. First is your descriptive design. Second, your correlations. This is also known as the ex post facto design. And the development research and the epidemiology research, it means it's talking about the disease, and the survey research. Yeah, first one is the descriptive research design. As everybody knows about the develop the theories and identifying the problem and the current practices. Ultimately, we can say that the accurate descriptions of the characteristics of the individuals, situations, और कि जो है हमको उसी तरीके से उसको justify करना पड़ेगा. It means that the make judgment and the determine what practices are doing the similar situations. कि इसके अंदर without imposing any control or the manipulation. So descriptive design, it means that develop the theory, and this theory is the accurate. कि कुछ उसमें मैनिपुलेशंस आप नहीं रखोगे, उसमें कुछ आपको जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो जैसा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बिहाफ पे ही आपको थ्योरी को डेवलप करना होगा. एंड द सेकंड इज योर कोरिलेशनल एंड एक्स पोस्ट फैक्टर
So it means it's a two types actually. It's a perspective and the retrospective. It's based on the time. It's show that cause and effect. Sometimes it's cause and effect, and sometimes it's effect and cause. So if we're talking about the perspective design, so perspective studies is sometimes called the cohort study. So it is that study. It means that the group study where participants are enrolled into the study before they develop the disease or outcome in the questions. कि आपको डिजीज के डेवलप होने से पहले, ठीक है, कि अब इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ अपने यू कैन सी दैट इन द स्क्रीन इन द एग्जांपल एंड यू कैन सी दैट द कॉज एंड द इफेक्ट. It means we can say that the researcher is conducting a prospective correlational study on effect of maternal infections during the pregnancy and the fetal development and the pregnancy outcome. कि generally in the science students इस type की research में जो ज़्यादातर वो लोग करते हैं, and you can see that कि what is before the study and what kinds of the outcomes कि after उसके बाद किस तरीके से outcome कि आपको during pregnancy आपको कुछ इस तरीके की problem है, तो जब प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी उसके किस तरीके से क्या चीजें हो सकते हैं, क्या चीजें किस तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टिव डिजाइन. एंड रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन इज कंप्लीटली opposite to the prospective design. So we can say that here is enrolled people who already have the disease and the conditions. It means that कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बाद में इफेक्ट मैं मेजर उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि क्या कॉज रहे होंगे जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स आई हुई है. ठीक है, तो देन अगेन वी कैन से दैट इस अगर हम इन स्टडीज की बात करें तो जनरली जो हमारे प्योर साइंसेस होते हैं, प्योर साइंसेस के अंदर हम लोग इनका यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट रिसर्च. Yeah, so development research, it means we'll talk about the phenomena of the respect of the time. So this time आपने generally सुना होगा, my studies are cross sectional designs and longitudinal design, and the same way हम data के time पे बात करते हैं ना, is the cross sectional data in the longitudinal data. It means हम बात कर रहे हैं in the specification of the time. So the first is the cross sectional design. अगर हम बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, डिफरेंट ग्रुप कंपेयर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं आई वांट टू स्टडी की द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी इन ऑल ओवर द कंट्री इन द सेम टाइम, एंड आई वांट टू सी दैट कि कंट्री के अंदर इट इज अ जोनल वाइज. अगर मैं बात करूँ द कंट्री डिवाइड इन द 5 पार्ट की, नॉर्थ की में बात करें, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, सेंट्रल की बात करें, ईस्ट की बात करें, कि 5 डिवीजन में मैं अपनी पूरी कंट्री को डिवाइड करती हूँ. एंड आई हैव चूजन द वन कोई भी एक अप स्टेट उसमें से मैं चूज करती हूँ. and at the same time I want to see that कि what kinds of the effect कि कितना ये favorable है, कितना ये unfavorable है. Similarly the science people कि they want to check the awareness about. अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड क्या था, पूरी कंट्री में इकट्ठा आ गया था. उसी टाइम पे मुझे कोई रिसर्च करनी थी कि कितने लोग अवेयर हैं कोविड के बारे में और जो प्रिकॉशंस है वो कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं. मैं माय स्टडी फ्रॉम जयपुर, दिल्ली, अगर हम देहरादून में सिमिलर टाइम पे, तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल डिजाइन. इट मींस दैट वी कैन से दैट द डिफरेंट ग्रुप कंपेयर एट वन टाइम, कि सेम टाइम पे कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सेम टाइम पे कोई डिजीज आया है, कुछ भी ऐसा हुआ है, उनका कंपैरिजन और उनका आउटकम्स है वो डिफरेंट स्टेट के अंदर सेम टाइम पे क्या रहेगा. ठीक है. एंड द सेकंड पॉइंट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन. सो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, इट मींस दैट द फिनोमिना मोर देन वन पॉइंट इन टाइम. So researcher is interested to the perception of the nurse. इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया है कि नर्सिंग स्टूडेंट है, वो जब नर्सिंग में एडमिशन लेता है और नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो दो चीजों के बाद जो हम टाइमिंग की बात करें हैं, जैसे जनरली हम लोग एक हमारा टेस्ट होता है पेड सैंपल टी टेस्ट. तो पेड सैंपल टी टेस्ट व्हिच वी हैव यूज्ड टू कंपेयर दैट की बिफोर एंड आफ्टर. तो सिमिलरली इन द लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन की व्हाट हैपन बिफोर ज्वाइनिंग एंड व्हाट हैपन आफ्टर ज्वाइनिंग, कि व्हाट विद द गवर्नमेंट अनाउंस सम पॉलिसीज इन 5 ईयर बैक, कि आज 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई थी एंड द सेम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि अब आपकी क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस, आपकी क्या सोशल कंडीशंस है, व्हाट इज अवेयरनेस अबाउट योर पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल, ट्रेडिशनल, एंड द आफ्टर 5 ईयर बैक
कि after implementation of the policies, I want to see that the changes. It means in terms of same indicators, same variables in economics perspectives, in social perspective, political perspective, traditional perspective, and उनको फिर मैं कंपेयर कर रही हूँ. It means that the basic things is that the cross sectional design at the point of time, similar point of time, and the longitudinal at more than one point of time. कि आपके पास बहुत सारे time, you have compare the timing, कि आप इस टाइम को उस टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं जो 5 ईयर 10 इयर्स का जो डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस से कितना चेंज, कितना आउटकम्स, कितना आउटपुट निकल गया. दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट, बिकॉज वी ऑलवेज नो दैट द डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, कि जो एक प्रोसेस है जो चल रहा है, कि अगर गवर्नमेंट ने आज कुछ डेवलप किया है तो आगे आने वाले 4 साल 5 साल में क्या होगा कि उससे वेलफेयर जनरेट हो रहा है, उससे स्किल्स जनरेट हो रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. देन सिमिलरली इन द डेवलपमेंट रिसर्च, what happened in the similar the same point of time, and what happened if we compare the different point of time. It means the cross sectional design and the longitudinal design. Yeah, as per the name, everybody is thinking okay, हम epidemiological बात कर रहे हैं, तो it means that that's talking about that there's some cause and disease. Generally these kinds of the studies are used by the science and the pure sciences, and the अगर हम बात करें biosciences वगैरह है, life sciences students से बहुत इन studies को use करते हैं, and we can say that is a cause. Generally the in this investigate the distribution, the cause of the disease in the population, either perspective, cause or to effect, and there is retrospective, it means the effect to cause. So 2 types of design. The first is the case control strategy and the cohort studies. So case control studies, it means the cause of a disease are investigate after the occurrence of the disease. So for example, researchers investigate the history of smoking in the patient diagnosed with the lung cancer. And the core studies, it means that longitudinal approach. So longitudinal approach, you know that we compare the 2 time period. It means what happened in the starting and the what is happened in last. This is called the retrospective effect of causes. Yeah, so last point is the survey research. So everybody knows about the surveys, and it's very interesting because of the social science students and the social sciences researchers, more like the survey research, because the majorities of the social science students, their studies is based on in the survey, in the primary survey. So survey research, it means that आप क्या कर रहे हो? So hello, am I audible? Hello. Yes, Yeah. Yeah, so investigation in which the reported data are collected from the sample with the purpose of describing populations on the some variables of survey research. It means हम some sampling की बात करते हैं, हम populations की बात करते हैं, different types of sampling methods के बारे में, which we are implicate, जो भी applicable होगा आपका survey research पे ही होगा, because कि first हमारा एक populations है, उस populations को decide करते हैं, and then we use some different sampling methods, कि मैं मल्टी सैम्पलिंग मेथड स्ट्रेटिफाइड की बात कर रही हूँ, रैंडमली मैं चूज कर रही हूँ. ठीक है, आप उस चीज आप पॉपुलेशन, आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. बिफोर कलेक्टिंग द डेटा यू फ्रेम ए क्वेश्चनर. दिस योर क्वेश्चनर इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्केल्स, लाइक यू फॉर्मुलेटिव स्किल्स का यूज कर रहे हो, आप लिकर्ट स्केल का यूज कर रहे हैं. इफ यू वांट इन द क्वांटिटेटिव, इट मींस दैट जनरली पीपल आर यूजिंग द फॉर्मुलेटिव स्केल्स एंड द लिकर्ट स्केल. इट मींस द 5-point लिकर्ट स्केल, 7-point लिकर्ट स्केल एंड द 10-point लिकर्ट स्केल. आप डिफरेंट स्केल्स का यूज कर रहे हो, कि स्ट्रांगली एग्री टू डिसएग्री, लो टू हाई, जो भी आपका है, अकॉर्डिंगली यू कलेक्ट द information, but you collect the information via the different perspective, like आप मेल के थ्रू यूज कर रहे हैं, टेलीफोनिक सर्वे आप यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर आप खुद फील्ड में जाकर पार्टिसिपेटरी. देयर आर सो मेनी थिंग्स. दिस इज द सर्वे रिसर्च. सो सर्वे रिसर्च इज अ मेजर पार्ट, and the ultimately survey is a part of the primary. Is more reliable. You have your own statement, or the statement is based on, you collect from the statement and the variables from the जो हम लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे हैं, वहां से आप उसको लेके आते हैं. इट मींस द ऑथेंटिसिटी, एंड टू चेक द ऑथेंटिसिटी, सम टूल्स एंड टेक्निक्स, लाइक जनरली इन द सर्वे रिसर्च पीपल आर यूजिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टू
कि ठीक है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा है टू रिडक्शंस द डेटा सेट, देन वी चेक द वैलिडिटी, आप वैलिडिटी चेक कर रहे हो, देयर आर सो मेनी प्रोसेस. सो अल्टीमेटली द सर्वे रिसर्च इज अ मेजर पार्ट ऑफ द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, and most probably in the social science students are using the survey research. So actually this is complete for my side. So it's now is open for the question answer round. If anybody have any doubt, please ask me. Hello.